Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. This is me Arya Wahid. You are on the channel of Medicare. So in this lecture we are going to start the drugs which are about the anti-hypertension. So this is the introduction lecture of the hypertension. We are not discussing the drug classification, just we are discussing the introduction of blood pressure. So hypertension mean increase in the blood pressure. So anti-hypertensive drugs, they are used to treat the hypertension. So there are many stages of hypertension. So the normal blood pressure is 120 to 180. So first of all, let's discuss what is the definition of blood pressure. That it is the pressure of the blood exerted on the wall of the arteries or blood vessels. So the elevated blood pressure is 120 to 129 and the lower blood pressure is this. In the stage 1, it increased to that value. Systolic blood pressure increases. In the stage 2, that is the stage of hypertension. So this is the stage of very high blood pressure. So it's need to be treated out with the help of drugs. But these two it doesn't need to give the drugs. So at that stage we don't give drug to the patient, but it needs the drug. So there are some types of blood pressure like the white coat blood pressure. In this blood pressure, the patient face the hypertension when he goes to the work, when he goes to the office, but at the rest he will do the normal. At the weekends he will normal. And the mass BP is a type in which the patient will feel increase in the blood pressure at the rest, while when he goes to the office for the work he has no BP. There are some other types of BP like primary hypertension and secondary hypertension. Primary hypertension means we don't know the cause of it. So actually hypertension has a lot of causes. Some people have hypertension due to kidney disease, some has hypertension due to pregnancy, some has hypertension due to some other reasons like age factor, like stress. So a lot of reasons can include, but if you don't know what the cause, you have primary hypertension, and if you know the cause, then it is the secondary. So like diabetes can also cause hypertension, or kidney diseases can also cause hypertension. So there are a lot of risk factor like CNS increase the hypertension, can cause you hypertensive disease. Stress, alcohol consumption, and alcohol, they actually stimulate this, increase the sympathetic activity. So whenever sympathetic activity increases out, it will vasoconstrict the arterioles, which can cause hypertension. And ओके, सो अल्कोहल को भी इसमें शामिल कर लेते हैं. बिल्कुल, अल्कोहल भी इसी तरह का ही काम कर रहा होता है. एज फैक्टर भी ये है कि 30 से 55 की एज के दौरान, क्योंकि एज ज़्यादा होने की वजह से आपकी आर्टरियोल्स की इलास्टिसिटी जो है वो कम हो गई होती है, जिसकी वजह से वो उतना ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करती हैं. इसी तरह फूड में ज़्यादा सोडियम या लिपिड लेना, ये भी आपको हाइपरटेंशन का मरीज़ बना सकता है. सो अब इनकी कॉजेज़, हम हाइपरटेंशन की आज कॉजेज़ को डिस्कस करने वाले हैं. So now let's discuss how the sympathetic activity can cause you blood pressure. So that's very simple. You know, whenever you have stress, whenever you are emotional, whenever you are working out something, so what will happens to you? Actually, it will directly affect your blood vessels and your kidney. So on your blood vessels, alpha 1 receptors are present. On your kidney, beta 1 receptors are present. So alpha 1, on alpha 1 receptor, norepinephrine will bind. It will cause vasoconstriction, which will cause blood pressure increase. On the kidney, beta 1 renin will reduce. Due to renin-angiotensin system, blood pressure increases out. In the age factor, elasticity of blood vessels decrease, हार्ड हो जाती हैं, TPR एंड रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है. इसी तरह किडनी पे भी इफेक्ट होता है, बेरो रिसेप्टर्स की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. इसी तरह एक और चीज़ आ जाती है कि रेनिन एक ऐसा भी केस है जिसमें हमें हाइपरटेंशन होती है, जिसमें सोडियम ज़्यादा होता है हमारी बॉडी के अंदर, रेनिन कम होता है. जैसे सोडियम ज़्यादा होता है, वाटर की ऑस्मोसिस होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है. बट किडनी इससे बेरोरिसेप्टर को सेंस करके रेनिन को कम कर देती है. अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है, जैसे किडनी डिसफंक्शन हो जाता है. सो किडनी डिसफंक्शन क्यों इसका कॉज है? बिकॉज किडनी हमारा एक मेजर ऑर्गन है
जिससे हमारे बहुत सारे फंक्शंस हो रहे हैं। तो अगर किडनी में कोई इस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है तो उससे ब्लड प्रेशर हो सकता है। जैसे एफरेंट आर्टरियोल्स अगर हमारी कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं या किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से वो ज़्यादा वो उनके अंदर स्पेस नहीं रही है, बहुत ज़्यादा यूँ हो गई हैं, तो जिसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, GFR कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेनिन कम होगा और फिर ब्लड प्रेशर, रेनिन ज़्यादा होगा और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह कुछ ये डिसऑर्डर्स हैं जिनकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो कम होता है और एज अ रिजल्ट BP हमें होता है। कुछ और रीजंस भी हम देखते हैं ब्लड प्रेशर की। सो इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा, इंट्राक्रेनियल मतलब क्रेनियल के अंदर प्रेशर। सो जब भी आप आल्टीट्यूड पे होते हैं CSF के अंदर बहुत ज़्यादा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से BP हो सकता है। इसी तरह प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स की वजह से BP हाई हो सकता है। सो लेकिन प्रेगनेंसी कोई एक डिजीज़ नहीं है, ठीक है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। सो इसकी वजह से BP हाई होता है, लेकिन बाकी जो हैं वो डिजीज़ हैं जिनकी वजह से आपको BP हाई होता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें इंट्रोडक्शन हमने लेक्चर देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसके ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।